This conference will now be recorded. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। हरि ओम। Thank you for appreciating this series. बहुत अलग अलग जगहों से बहुत अलग अलग मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है और उन सभी को मैं नमस्ते कहना चाहूंगा। अलग अलग बाद में भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इसका एप्रिसिएशन भी हो रहा है। इन सभी के लिए हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार है। हमारी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से है कि पेशेंट ने बोलना चालू किया तो तुरंत हमें मेडिसिन्स सूझने लगते हैं। हम एक बिलीफ कर लेते हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, यही है, और उस तरीके से हमारा माइंड काम करने लगता है। ये परिस्थिति की वजह से हो या जो भी हो, जिस पर उसकी वजह से हमें ऐसे लगने लगता है कि तुरंत ये मेडिसिन दिया जाए। पेशेंट को छींक सिर्फ आए आपके सामने या वो कहे कि मुझे छींक आती है तो तुरंत हम कहते हैं त्रिभुवन कीर्ति दे दो। पर एक वैद्यकीय ट्रेनिंग में हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा मेडिसिन देते हो, इंपॉर्टेंट ये है आप उसका डायग्नोसिस कैसे करते हो। हाउ आर यू एक्सप्लोरिंग द केस, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारी ट्रीटमेंट ये पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि ड्रग सेंट्रिक। अगर ये ड्रग सेंट्रिक ट्रीटमेंट हुई तो आपको 70% केसेस में रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपकी ट्रीटमेंट अगर पेशेंट सेंट्रिक रही तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। द आंसर इज नो, क्योंकि असाध्य व्याधि भी कुछ है एक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि आमवाद जैसे बलाढ्य जो व्याधि रहते हैं उसमें बहुत हद तक ट्रीटमेंट में रिजल्ट भी नहीं मिलता। हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, हमारी मर्यादा क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सभी चीजें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से पेशेंट को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ट्रीटमेंट क्या दे। एक एक कंसेप्चुअली अगर हम ये समझते जाए कि ये क्या है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी mainly rheumatoid arthritis often affects cervical spine. बहुत कम बार थोरैसिक और लंबार स्पाइन अफेक्ट होते हैं। Relatively, clinical manifestation is relatively uncommon in case of lumbar disc related to rheumatoid arthritis. It consists of aching pain, rather diffuse type aching pain with impairment of spinal movements. ये उसका कार्डिनल साइन है। Symptoms develop insidiously without any injury, without any history of injury. In many rheumatoid arthritis is present in 3+ joints, that is more than 3 joints. So with the help of history and examination you will come to know easily that it is rheumatoid arthritis. अभी
In case of X-ray, मतलब बहुत ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी thinning of intervertebral disc space is there, erosion of articular surfaces at facet joint is there. So these two things are there in case of rheumatoid arthritis. आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस जो होती है, दैट इज उसमें थीनिंग ये दिखाई देगा, ये जो भाग है इसमें स्क्लेरोटिक चेंजेस ये दिखने लगते हैं. दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो दैट इज पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस. Pathological investigations are very important in case of rheumatoid arthritis. अगर पॉसिबल है तो आप एक काम करें, अगर आपको हर बार पॉसिबल होगा तो एवरी मंथ गो फॉर एटलीस्ट CBC फॉर rheumatoid arthritis patient. अगर rheumatoid arthritis के पेशेंट को आप विद CBC हर बार देखना चालू करें तो बहुत फायदा होगा. हर बार अगर सिर्फ लंघन पे हम लोग आमवाद ट्रीट करें, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एवरी टाइम आमवाद इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ओनली आमवाद, नो. पर मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस की केस आपके पास आती है जिसमें सूजन है, वीकनेस है, फीवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर से. इसमें पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें समझ में आता है कि डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट कब दे, एक्यूट एक्सकर्बेशन कब है, WBC कब बढ़ा हुआ है, लिम्फोसाइट कब कम हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू दैट रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो कितना बढ़ा है, कब बढ़ा है, कब नहीं बढ़ा है, एक्सेट्रा. सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इट. सो laboratory testing is very important tool for clinical diagnosis of rheumatic diseases. It is important to remember that mere presence of laboratory abnormality does not amount to a disease, and single test neither confirms nor excludes the diagnosis. So what is important is your clinical assessment and not pathological investigation. Diagnosis is sum total of history, examination, findings, along with say investigations. All that matters for pinpoint diagnosis. So before a test is requested, we must know what is its utility in your clinical setting. And for that matter, we need to know pre-test probability, that is likelihood of that diagnosis in clinical setting, and sensitivity and specificity of the assay. We can calculate post-test probability also. So say pre-test probability of SLE in two patients is say 75% and 10%, and ANA test has sensitivity of say 98% and specificity of say 50%. Then post-test probability of SLE is 98, 75, that is say 85 to 87%, and its specificity is around say 16%. So you can tell the patient that if ANA comes positive, then you can predict something before investigations also. So a clinical diagnosis is more important than diagnostic tools. Diagnostic test has an impact on evaluation of specific patient only if
it changes diagnostic probability. That is important. See, there are n number of pathological investigations are there for, say, rheumatology, but we have to do few of them. The main, just a minute. Motor behind investigations, tests done to diagnose, confirm, rule out of specific group of ailments, tests done to monitor disease or effects of therapy, and tests done to detect complications of acute or chronic target organ damage. So, there are three main things related to spine. First is WBC is on higher side or moderate to severe on higher side, and platelets are mild to moderate, it is on lower side. ESR is increased to severe and no other abnormal cells found. So it is an infective pathology, and with the help of this, you must go into details of where the infection is, where the infective focus is. So the second is HB mild to moderate. HB is on lower side, say around 9 or 8. WBC is mild to moderate, it is on higher side, and platelets say normal. ESR say around 50, 55, mild to moderate. So this is inflammatory disorder like rheumatoid arthritis or SLE, like that. These are basic things related to only CBC we are talking about. HB is normal or slightly on lower side, WBC is normal, platelets normal, ESR normal, no abnormal cells, then it is mainly degenerative disorder or osteoarthritis of, say, facet joint. So there is no much abnormality in pathological investigations. So RA test. RA test is IgG antibodies produced during some infection of joint to protect that joint, because of which antibody alters. In short, the antibody is known as RF, rheumatic factor, and that gets increased. That's it. Higher the level of RF, that is rheumatic factor, the greater the probability of destructive articular disease. In patients on treatment, a decline in the level of rheumatoid factor is associated with reduced clinical disease activity. So, if you are starting Suvarna Malini Vasanta to a patient of rheumatoid arthritis, please note that you should go ahead with rheumatic factor first. Say if it is 30, 35. After that, just a minute. There is one question. Please let us know, Sneha, whether and when contraindicated, in which condition patient should give strict bed rest. Right. Madam, right? Sumita Jitevar. Yes, madam. First, let us please listen to this particular thing. That is, we are talking about pathological investigations right now. There are n number of factors related to it. When Sneha is restricted, for that matter, one should understand the Samprapti. We are not coming to Samprapti right now. First, we will go ahead with pathological investigation. Please remember, don't jump on any conclusions. You don't jump on any medicines directly. See, this is not the course of, say, ready regular. It will not be just a ready regular. We will
teach you thoroughly. We will teach you some points which are very, very important in practice. So please have some patience. Anti-CCP, this is to confirm diagnosis of RA. While RF is more common in RA patients, many patients with positive rheumatoid factor do not have rheumatoid arthritis. So it is less prognostic significance than CCP. So CCP has prognostic value since it is associated with a greater tendency towards more destructive form of rheumatoid arthritis. ANA is common denominator that unites nearly all patients with SLE. So ANA is also an important factor. The third one is CRP. It is protein found in blood plasma. It is related to, say, inflammatory disorder. It is marker of inflammation, useful, determines disease progress, effectiveness of treatment. Say if before and after CRP you can take, start with some Google. Before CRP it is say 12, and after taking 10 days or 15 days or 20 days of Google, again you go ahead and check with your CRP. It may come down to say 6 or 7. Then it has an anti-inflammatory reaction. You can easily state that. So it proves your effectiveness of the treatment. It is more sensitive and accurate reflection than ESR. It is useful in many other symptoms also. You must be knowing it is useful in COVID also. Uric acid. C. Increased production, decreased excretion, or mixed. There are main causes of. There are three main things related to it. See, increased production, decreased excretion, and mixed. In case of decreased excretion, remember one thing: it is always with edema on, say, parvasandhi or edema on leg. If it is related to increased production of uric acid, it is always related to tenderness of joints. So if it is increased production, first thing that you have to cut down non-vegetarian diet, you have to cut down all proteins from the patient's diet. That is number one. And he has to stop complete alcohol consumption. But in decreased excretion, you have to give some mutral medicine along with pathya. That is very important. So along with Kokilaksha Kashaya, please give the patient Gokshur or Gokshur Punarnava with Kokilaksha. That is very important. High level, it is seen in gout, diabetes plus hypoparathyroidism. HLA-B27 is used in ankylosing spondylitis, LFT to monitor disease-modifying agents. That there are certain drugs like Folitrax, Methotrexate, or HCQS, which may increase SGPT, SGOT levels, that is enzyme of liver. So we have to be very much careful. Patient comes to us with all these drugs he is already taking. Serum ferritin, serum parathyroid for vitamin D deficiency, ASO, anti-streptolysin O for streptococcal infection, and serum calcium for osteoporosis. See, in case of say ASO positive, if you take a very good history, then you will come to know about the upper respiratory tract infection. Patient will give you proper history of upper respiratory tract infection. So this is just a summary. In acute phase, it is 4+, ferritin is 4+.
say this is just a summary which we were talking about. So let us not go again into details of this. Now, let us go into details of say ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis is a different type of disease, and I know you must be knowing that ankylosing spondylitis is vata rakta, and we can treat it with the help of say rakta mokshan. We can treat it with the help of say rasaraj ras, etc., etc., etc. Please do not jump on the diagnosis and on the treatment. Now let us start exploring this ankylosing spondylitis. It is a chronic inflammation progressing slowly to bony ankylosis of joints of spinal columns and occasionally of say major limb joints. So the cause as such is unknown. It is distinct from rheumatoid arthritis, although it is sometimes uh, termed as rheumatoid spine, but it is a loose term. It is not a specific scientific term. Uh, there is a relationship with certain types of seronegative chronic juvenile arthritis also in members of the family. So, important is history in this case. It always begins in sacroiliac joint. Patient comes to you with say sacroiliac pain along with swelling at heel, swelling at heel region. Patient comes to you with sacroiliac joint pain, and it usually extend upwards. It involved lumbar, thoracic, and often cervical spine, occasionally hips, and very, very occasionally shoulders also get affected. Articular cartilage, synovium, ligaments show chronic inflammatory changes. Eventually, all these things become ossified, and after many years, inflammatory process is there. Afterwards, it may reduce also. So, if a patient of say, if a male patient comes to you of say 20 years with severe pain in lumbosacral region, please examine him thoroughly. One, and second, immediately go for his blood tests and x-rays. That is very, very important. You have to rule out ankylosing spondylitis, and remember one thing: ankylosing spondylitis only if males suffer with ankylosing spondylitis. Many a times female won't suffer with ankylosing spondylitis. It is nature of the disease, that's all. Many a times it is rarely it is confined to men only, and the age is 16 to 30. Early symptoms are pain in lower back, increasing stiffness. Later pain migrates upwards. I have a family, a father with two kids. All three are having ankylosing spondylitis, and all three are taking complete Ayurvedic treatment only. The father is of age say 50, 52. I don't remember exact age of his. The two kids are of say one is of 27, other one is of say 22, 23. No, 20, around 25. Now both are having complete restriction of movements and stiffness in low back,
plus lumbosacral region plus thoracic region, and now it has affected his neck also. So that much deadly disease it is. It is a disease with complete, say, pain, stiffness, and restriction of movements. So, diffuse radiating pain down one or both lower limbs is very common. And uh, this is bambooing of spine. When thoracic region is involved, chest expansion is markedly reduced, often to less than 2.5 centimeters. Normal chest expansion of a normal person is around, say, 8 to 9 centimeters. But in case of severe ankylosing spondylitis, where thoracic spine is involved, at that time, the chest expansion is markedly reduced to 2.5 to 3 centimeter also. So that is very important. It is known as poker back. In few cases of hip and shoulder also, they are affected with mainly with pain and limitation of movement. If a female person comes to you having diabetes plus if it resembles like frozen shoulder, if it resembles like adhesive capsulitis, patient comes to you, she takes medicines, she is of female, say 50-52, she takes medicine from you. The next time she tells you that my pain has reduced, but restriction of movement is slightly there. Again, she disappears from your clinic. Again, after 2 months, she comes to you. Again, she says, now my left shoulder is paining. Again, you start examining her. She is having diabetes. So you, after examination, you probably tell her that you are having frozen shoulder or adhesive capsulitis. Again, she takes medicine. If she comes to you for the third time for shoulder pain, come on, get her HLA-B27 done. It is ankylosing. It is ankylosing. Take good history of that patient and start treating her ankylosing spondylitis. That is very important. In this case, radiology is very important. So, in case of radiology, there are 4 or 5 points related to it. See, early stage, there is fuzziness of both sacroiliac joint of, say, ankylosing spondylitis. It is fuzziness of both sacroiliac joint so that joint outline is no longer clearly defined. Later, SI joints are completely obliterated. If disease progresses, intervertebral joints in lumbar, thoracic and cervical region undergo bony ankylosis with prominent anterior bridging of vertebral bodies. I will show you what bridging is. So, it has to be distinguished from other causes of back pain and sciatic pain. Marked limitation of spinal movement, reduced chest expansion, typical X-ray picture, and say ESR is and CRP is raised, slightly raised in diagnosis along with HLA-B27 positive. There is permanent stiffness, extent of which varies widely from case to case. Complications include fixed flexion deformity of spine. There are some pictures also. This is known as
fixed flexion deformity of spine. It is like scoliotic changes only or kyphotic changes only. So maybe patient is having respiratory infections on and off. So that is the case. In case of say any spinal disease, we are dependent on X-rays. In case of X-rays, how to read this type of X-rays? Alignment, B for bone, C for canal and curvature, D for density, E for extraspinous growth. So there are these points are there related to it. So you can see this alignment. You can easily come to know that this alignment is improper, not proper. This is alignment. Vertebral body, spinous, this is spinous process, this is a disc space, and these are facets. So these facets become opaque in case of metastasis. In case of a patient comes to, yesterday I described one case. Patient was having metastasis at the spine level. It is at this particular facet level. And the case was of, anybody remembers the case? Where facet is completely opaque. The case was of prostate cancer. In this case, severe back pain is there, and after that, after your X-ray or something like that, you will immediately come to know it is not related to lumbar spondylitis or something like that. It is not degenerative change, but it is prostate cancer, and this is metastasis of cancer. B for bone, then C. This is cervical rib. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां सब नीचे की तरफ देखने वाले वर्टिब्रे है और थोरैसिक सब ऊपर की तरफ देखने वाले वर्टिब्रे है. तो ये C7 का जो प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस, ये थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम सर्वाइकल रिब के नाम से वो जाना जाता है. इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ बोन, नथिंग एल्स. सो ये उसमें होता है. और इस पेशेंट्स में हमें पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा. ये बार बार पेन हो सकता है, ये कहना पड़ेगा. एजुकेट करने के बाद फिर बड़ी कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं. Body gets acclimatized to this cervical rib. Remember this. You don't have to go for surgical intervention for all these things. ये आपको सिर्फ पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सरे पर बताना है कि आपको ऐसे ऐसे हुआ है, तो फायदा होगा. In case of, say, metastasis, collapsed vertebra is there. In case of metastasis, disc space is normal. Pedicles are disrupted in metastasis, and this particular area gets opaque. In case of collapsed vertebra, number 2 case, in this case, if it is infection, then adjacent disc gets narrow or obliterated, but the pedicles are intact. Adjacent disc gets narrow.
In case of, say, osteoporosis or osteomalacia, the disc space get increased. That is the main thing, because the bone density is reducing. So, in case of osteoporosis and osteomalacia, disc space is normal or slightly increased in height. Pedicles are intact. In case of collapsed vertebra trauma, there is a wedge shaped vertebra is there, and with concave superior surface. It is wedge shaped vertebra. Disc space is normal. Associated fracture of pedicles, neural arc injury, that we can see afterwards also. But in this case, wedge shape with concave superior surface, it is known as a fracture or trauma or wedge shape vertebra. So again, I will go into details of it. Just I'll repeat. First is metastasis. Disc is normal, pedicles destructed. Mainly it is male patient, and mainly the metastasis, the main focus of cancer is at, say, prostate, and this is metastasis. Bone, in case of bone density, there are 3-4 factors: collapsed vertebra, infection, adjacent disc narrow or obliterated, pedicles are intact. In case of osteoporosis of osteomalacia, disc space is increased in height because there is a reduction in density of bones. Pedicles are intact. In case of trauma, wedge shape with concave superior surface. Wedge shape vertebra is there with concave superior surface. So, and normal disc space is there. Associated fracture of pedicles or neural arch injury can be seen afterwards. So, these are related to collapsed vertebra. Now, it is time for A for alignment, B for bone, then C for canal and curvature. D. This is related to density of bone. Osteoporosis is there. C. These bones are related to osteoporosis. This is known as sandwich vertebra. See, you can see these two braids, and in between these two braids there is tomato, cucumber and musk pears. Dense bands of sclerotic bone parallel to end plates are seen in this patient with osteopetrosis. These are called sandwich vertebrae, which are much more distinct than dense bands of sclerosis seen in Ruger Jersey spine. I'll tell you in details related to Ruger Jersey spine. Osteopetrosis is marble bone disease where bones are very hard but fragile. Immediately patient gets fracture. So this is density. Bone within bone appearance. Sandwich vertebra is alternating sclerotic plus radiolucent transverse metaphyseal lines indicate fluctuating course of disease. This is osteopetrosis. If a patient comes to you with sandwich vertebra, it is osteopetrosis or marble bone disease. Let him go for blood test and we have to evaluate it further. Accordingly, we can place Tiktak Basti for this patient. This is Ruger Jersey appearance. See, these vertebrae look like a Ruger Jersey appearance. So, very interesting name. It is sclerotic superior and inferior end plates of vertebrae from secondary hyperparathyroidism
from renal diseases. So if a patient comes to you with Rugger-Jersey syndrome, go for its creatinine first and then other things accordingly. But please evaluate these type of cases very correctly. Rugger-Jersey is renal osteodystrophy also. Many a time it is related to renal dysfunction, and go ahead with pathological investigations such as renal function test. In case of sandwich vertebrae, it is osteopetrosis. Dense bands of sclerosis parallel to end plates are seen in this patient. So it looks like Rugger-Jersey spine. So in this case, there are abscess, that is E extraspinous growth. See, this is known as bird nest appearance. This is known as bird nest appearance. This is particularly. This is thoracic vertebrae and this is bird nest appearance. In this particular case, this bird nest appearance, see, it is completely प्लीज आयुर्वेद पैथोलॉजी भी एक्सप्लेन कीजिए. नो प्रॉब्लम. ये होने के बाद अभी हम बाकी सब बन करके सिर्फ संप्राप्ति पे ही ध्यान देंगे. सो दिस इज बर्ड नेस्ट अपीयरेंस. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां मेरे पेशेंट्स को प्रॉब्लम हुआ, मेरे नॉलेज की लिमिटेशन की वजह से, वो मैं जरूर कवर करना चाहूंगा. ये पेशेंट है कोल्ड एब्सिस का. ये पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा. ये पेशेंट है कोल्ड एब्सिस का, जिसके लिए पेशेंट वाज हैविंग सीवियर पेन. सीवियर पेन होने के बाद वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास गए. पेशेंट ने इंसिस्ट किया. आयुर्वेदिक फिजिशियन को कुछ भी नहीं समझता था एक्सरे रिलेटेड. He was giving him medicines for more than 1.5 months. Patient was having severe pain at say L1, T12, L1 level. और उसके बाद उसने एक्सरे निकाला. एक्सरे में जो रेडियोलॉजिस्ट थे उसने कुछ भी नहीं लिखा था. This was the case. और ये कोल्ड एब्सिस अपीयरेंस है. पेशेंट was having tuberculosis at the level of say T12 L1. ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है और वो एक अच्छा क्लिनिशियन इमीडिएटली रूल आउट कर सकता है. उसके बाद और 1 महीने तक आयुर्वेदिक फिजिशियन ने स्नेहन, स्वेदन, विद्यकर्म, अलग अलग मेडिसिन दिए. पेशेंट got worsen. Patient was having severe pain. There was no result. Afterwards, he turned to an orthopedic surgeon, where immediately he went for MRI. अब ऐसे प्लीज न बोलिएगा MRI ही किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने तो डायग्नोस नहीं किया. The answer is no. Only our orthopedic surgeon diagnosed it correctly. That was tuberculosis. He was treated with AKT and patient got fine within a span of 1.5 months. Important was diagnosis was missed. Patient got spoiled, case was spoiled, and it was only because he was not having the basic diagnostic skill. So it is very important. और ये जो कोर्स है वो इसमें आयुर्वेद और मॉडर्न आपको दोनों बताया जाएगा. और मैं वापस आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, यू मे मिस दिस टाइप ऑफ डायग्नोसिस which is very commonly missed by आयुर्वेदिक फिजिशियंस. बहुत लोगों को इसमें ऐसे लग सकता है कि ओ ऐसे होता है क्या. तो हाँ, होता है. रेगुलर प्रैक्टिस में मैं ये देखता हूँ बहुत बार आयुर्वेदिक, बहुत अलग अलग आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाके
आके यहाँ ऑर्थोवेद में उनका डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस के वक्त हम सब टूल्स यूज करते हैं. वी यूज एक्सरे, वी यूज एमआरआई. एमआरआई करने के बाद भी सिर्फ हम रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत कुछ सिंपल डायग्नोसिस होते हैं जो क्लिनिशियन होने के नाते हमें समझ में आते हैं. तो हमारा एक परसेप्शन होता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, which is confirmed with the help of these pathological and radiological investigations. So these are very important point. ये जो अभी हम लोग स्लाइड देख रहे हैं, बर्ड नेस्ट अपीयरेंस, ये बहुत बार आयुर्वेदिक फिजिशियन ने मिस करते हुए मैंने देखी है. अगर बर्ड नेस्ट अपीयरेंस का पेशेंट आपको नहीं समझे और आप इसकी कितनी भी आयुर्वेदिक पैथोलॉजी लगाने की कोशिश करो, you will miss this diagnosis and you will spoil this case. So this is very important, bird nest appearance. It is very important. This is cold abscess. इस पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद, मैंने 2 सर्जरीज देखे जिसमें ऑपरेट करने के बाद किडनी ट्रे भरकर, एक पूरा किडनी ट्रे भरकर पस आया हुआ मैंने देखा है. तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम नहीं कि आपके कॉलेज में कैसे ट्रेनिंग हुई है, पर मेरी ऐसे ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि ये जो छोटी बारकाइयां थी ये मुझे समझ में नहीं आती थी. क्या करना है इज वेरी सिंपल, क्या नहीं करना है, कौन सी केस हाथ में नहीं लेनी है और कौन सी केस स्पॉइल नहीं करनी है, ये समझने के लिए ही क्लिनिशियन रहता है. बाकी तो मेडिसिन ये केमिस्ट भी दे देता है समझने के बाद. इट इज अ फैक्ट. Anyway, let us go into details of, say, treatment. ये जो we were talking about ankylosing spondylitis. अभी आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में मैं बोलूंगा. फर्स्ट इज प्रत्येकम स्थान दूष्यादि क्रिया वैशेष्यम आचरित. इंपॉर्टेंट इज स्थान, देन स्थानम, that is पक्वाशयादि. In this case it is कशेरुकादि. वहां पर होने वाली अलग ही पैथोलॉजी है. ठीक है, ये आमाशयोद्भूत हो, पक्वाशयोद्भूत हो, पर तीसरी एक पैथोलॉजी यहाँ पे आती है और दैट इज कशेरुका समुत्थ. वो मैं बताऊंगा कैसे. दुष्य इज रस रक्तादि. कौन सा दुष्य अफेक्टेड है कैसे समझेगा हमें? तो रक्त क्षय है, मांस वृद्धि है, इसके श्लोक आपको सभी को आते हैं. इसमें से देखना पड़ता है कार्डिनल साइन कौन सा है. आदि इज आवरण. आदि आवरण कौन सा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट बदलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बाहुशोष का है फिर भी उसमें रक्त मोक्षण कहा गया है, क्योंकि रक्त दुष्टि उसमें देखी जाती है और रक्त दुष्टि जब तक ट्रीट ना हो तब तक सिर्फ वात की चिकित्सा करके कोई फायदा नहीं, पेशेंट का पेन बढ़ता ही रहता है. सो कौन सा आवरण उस पे है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कार्डिनल साइन से वो समझ में आने लगता है. कार्डिनल साइन है. So there are n number of Ayurvedic diagnosis. मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो लास्ट के पॉइंट होते हैं, ऑस्टियोफाइट जब डेवलप होता है तो यहां से परपेंडिकुलर डेवलप होता है, और जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ब्रिज तैयार होता है वो यहाँ से पैरेलल तैयार होता है. तो ये ऑस्टियोफाइट और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बाम्बोइंग ऑफ स्पाइन का बेसिक डिफरेंस है. Now let us come to the Ayurvedic pathology in these cases. HLA-B27 पॉजिटिव का पेशेंट है और एक्सरे shows bambooing of spine, but the patient was having त्रिकग्रह, अस्वेद, शिरशूल, दाह, low grade fever every after 2-3 days, संध्यस्थीशूल, पर्वभेद and निद्रानाश. Now
I treated this patient as ankylosing spondylitis and I got failed क्योंकि ये मॉडर्न डायग्नोसिस था इसकी वजह से मैंने सिर्फ उसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके ट्रीट करने की कोशिश की और आई फेल्ड. सो आई एक्सप्लोर्ड दिस केस जिसमें मुझे समझा ये त्रिग्रह है, अस्वेद ये लक्षण इसमें दिखाई देता है, शिरशूल इसमें है, दाह इसमें है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये क्या था? इन डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद कफपित्तात् त्रिग्राही, पृष्ठाद वातकफात्मकः, वातपित्तात् शिरोग्राही, त्रिविधः स्यात् तृतीयकः. ये क्या है? सान्निपातिक ज्वर है जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं और ये इसमें भी स्पेसिफिकेशन हम देख सकते हैं. अगर ये त्रिग्राही आपको दिखाई दे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है जो मेरे पास आया था पूरी फाइल्स लेके, जिसे HLA-B27 पॉजिटिव था, और हमने एक्सप्लोर जब किया तो उसे त्रिग्रह था, अस्वेद था, शिरशूल था, दाह था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लो ग्रेड फीवर वाज देयर और ये एक्सप्लोर करने के बाद, उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, इट वाज लो ग्रेड फीवर विद संदेस्ती शूल, पर्वभेद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अगर इसमें भी लंबार स्पाइन अफेक्टेड है तो इट इज मोर ओवर कफपित्तज. इफ it is thoracic spine involvement, then it is vata kafatmak, and if it is cervical spine oriented disease, it is vata pittaj. So according to that, if we start treating these type of cases, patient gets good relief. इस पेशेंट में along with other medicines, विरेचन दिया गया पेशेंट को, लंगर, विरेचन, और उसके बाद उसको क्षीरपाक चालू किया and patient was fine आफ्टरवर्ड्स. कौन से क्षीरपाक यूज किए गए? ये एक तो हम अश्वगंधा क्षीरपाक यूज करते, बाद में पाचन सब होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं. अश्वगंधा या रसोन क्षीरपाक अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन, मतलब वातपित्तज है तो अश्वगंधा देते हैं, या ये रहा सारीवा सिद्ध क्षीरपाक भी देते हैं, नहीं तो वातज रहा प्लेन तो रसोन सिद्ध क्षीरपाक भी दिया जाता है ज्वर की बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद. इफ इट इज संतत ज्वर, देन पाचन, इट रिस्पॉन्ड्स टू पाचन. इफ इट इज सतत ज्वर, दैट इज रक्त धातु इज इन्वॉल्व, देन रक्त प्रसादन इज डन. इन अन्य दुष्क्य वी डू रुक्षण, तृतीयक रुक्षण. अस्थि मज्जागत अगर हमें दिखाई दे तो उसमें स्नेहन ये किया जाता है. सो इस सब में अगर ये ज्वर आप ये करते हो, उसे डायग्नोस करते हो, तो उसके विषम ज्वर, सॉरी नॉट सन्निपातिक, इट इज विषम ज्वर, तो कोई भी ज्वर हो पहले आम की परीक्षा की जाती है. आम की परीक्षा आपको सभी व्याधियों में की जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, दैट वी ऑल नो. अजीर्णजन्य हो, दुष्ट रसज हो, लीन दोषज हो, विषज हो या मल संचयज हो, कम समय में तैयार होने वाला और जिसके तात्कालिक परिणाम हमें दिखते हैं, ऐसा आम तैयार होता है. कम समय मतलब से सिर्फ नींद आना, खाने के बाद तुरंत नींद आना, उसका तात्कालिक परिणाम है. कम समय में तैयार होने वाला आम है, इट इज नेचुरल. दीर्घकालीन परिणाम होने वाला भी होता है, मध्यम समय में तैयार होने वाला, और बहुत दिनों तक आप फ्रूट सलाद खा रहे हो और बहुत सालों के बाद आपको कुष्ठ डेवलप हुआ, ऐसा भी होता है. बहुत दिनों तक आप विरुद्ध आहार ले रहे हो और आपको सालों के बाद, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज रिलेटेड टू बहुत सालों तक जो आम तैयार होता है, और बहुत सालों तक तैयार होके वो दीर्घकालीन परिणाम दिखाने वाला होता है. ऐसे अलग अलग आम के प्रकार होते हैं. अगर आम आमाशय में है
तो अग्निमांद्य, मलावरोध, वेदना, शोथ, आलस्य, अरुचि, क्लम, गात्रगौरव ये दिखेगा। निर्विबंधो, अल्प वेदना और स्निग्ध खाने से उपशय अगर मिलता है तो दैट इज निरावावस्था। अगर पेशेंट आपको सिर्फ क्लम ये लक्षण लेके आता है तो याद रहे स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरवानील, मूढ़ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठिव, मलसंग, अरुचि, क्लमात। सी आप इमेजिन करें आपके पास एक आमवाद की पेशेंट आती है और वो कहती है नहीं नहीं मुझे भूख तो लगती है, मुझे बलभ्रंश भी नहीं है, सिर्फ मुझे अरुचि और क्लम ये दो ही लक्षण है। तो रिमेंबर दिस थिंग, अरुचि एंड क्लम mainly in amavastha, mainly it is related to malasanga. If patient is having extraordinary alasya, then it is because of anila mudata. If patient is having balabhransha and gaurav, it is because of srotorod. Arm is there, but according to the clinical lakshan, clinical signs and symptoms, you can exactly come to know that it is because of apakti or malasanga. If aruchi and klam is there in case of say amvad, then go for haritaki. If it is nishtiva pradhan amvad, then go for shunthi. Like that. So इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप कामला में भी देखो बलभ्रंश होता है बिकॉज ऑफ स्रोतोरोध। सो हर डिसीज, आप कोई भी डिसीज ले लो, इस डिसीज में आपको जितना इवेल्युएट करना होगा उसमें ये चीज एक काफी अच्छा काम करती है। सो आम परीक्षा में इतनी चीजें हैं, आपको तंद्रा, जृंभा, क्लोम, आलस्य, उत्क्लेश, ग्लानि, गौरव, इतनी चीजों को देखना होता है, इतने अलग अलग लक्षण उसमें देखे जाते हैं। सो ये क्या है ये आप सुश्रुत संहिता में पढ़ सकते हो। सो इसमें हम अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं, उसकी जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके बारे में टुमारो, द नेक्स्ट डे। आपको बहुत बुरा लगेगा पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोगों की ट्रेनिंग ही ड्रग सेंट्रिक हुई है। नो, we should be patient centric, we should be diagnostic centric. आप अगर बहुत अच्छा डायग्नोसिस करना चाहते हो तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए थोड़ा बहुत काम में आ सकता है। If it is drug centric, then I am helpless, क्योंकि जब तक मैं वो एक्सप्लोर ना करूं। और कल एक सर है, एचओडी है निदान के, जिन्होंने शरीर रचना और उसके हिसाब से कौन सी रचना इफेक्ट होने के बाद हम द्रव्य को कैसे चूज करें, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, जिसके बारे में मैं आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल एक्सप्लोर जरूर करूंगा। दीज आर कंसेप्चुअल थिंकिंग्स। ये कंसेप्चुअल थिंकिंग अगर आपको आने लगे, आम में आलस्य कब देखना है और गौरव कब देखना है ये समझे तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको मैंने वो उसके सूत्र भी बताए, वो इट इज वेरी सिंपल। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरवानील, मूढ़ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठिव, मलसंग, अरुचि, क्लमात, ये जो था ये भी किस तरह से सेग्रीगेट करना है ये भी अभी हमने देखा। Now a patient comes to you, male, 48 years old, having HLA-B27 positive, X-ray shows bambooing of spine. In this case, hematemesis, cast, uroruk, chhardi, parshva, prushtha, katigraha was there, and urine was having 2+ blood. क्या है ये? शुष्कति अंगम प्रवेपते, क्रमाद वीर्यम बलम वर्णो रुचि अग्निश्च हीयते, ज्वरो व्यथा मनोदैन्यम एंड पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। ये हमने ये केस हमें कामत सर ने बताई थी, जिसमें उन्होंने क्षतक्षीण करके इस पेशेंट को ट्रीट किया था। ये अलग केस है, फीमेल 41 इयर्स ओल्ड, अंश पार्श्व अभिताप, ज्वर, जृंभा,
कास। ये त्रिरूप राजयक्ष्मा करके ट्रीट की गई केस है। जुरुम्भाम ज्वरम च संधिस्थ उरस्य च उरसो रुजम। सो इस केस में राजयक्ष्मा वेगावरोधा क्षय चैव सहसद विषमाचन इस तरह से ये केस थी और इसे राजयक्ष्मा करके ट्रीट किया गया। दिस वाज नॉट ट्यूबरक्यूलोसिस, इट वाज राजयक्ष्मा, त्रिरूप राजयक्ष्मा करके ट्रीट की गई केस है और बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट मिला था। सी दिस पूरो विरुज्यते तस्य भिद्यते अथ विभज्यते। अभी इस सूत्र के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, पर अभी हमने जो देखा वो ये था, ये जो एक्सटर्नल पीना है वो और हमारी वॉल को पेशेंट को कहने का यहाँ पे वॉल को टच करके खड़े रहे और ये एक्सटर्नल पीना और वॉल इसके बीच का अंतर नापना चाहिए। आफ्टर योर ट्रीटमेंट से आफ्टर 45 days or 50 days again you measure these particular distance, it should be reduced, ऐसे वो नापा जाता है। सो कितने भी आपको आयुर्वेदिक सूत्र आए, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि किस तरह से वो क्लिनिकली देखा जाता है। प्रपीड्यते ततः पार्श्वे शुष्कति अंगम प्रवेपते। शुष्कति अंगम ये होता है वो सिंडेस्मोफाइट। ये देखिए, ऑस्टियोफाइट होता है वो परपेंडिकुलर जाता है, सिंडेस्मोफाइट है वो ऊपर की तरफ पैरेलली ऊपर की तरफ आता है और ये ब्रीजिंग उसमें तैयार होता है। पहले स्क्लेरोटिक चेंजेस होंगे, फिर स्क्वेरिंग, सिंडेस्मोफाइट्स डेवलप होंगे और इसमें कंप्लीट ब्रीजिंग ये दिखाई देता है। जैसे जैसे शुष्कता बढ़ जाती है वैसे वैसे ये बढ़ जाता है। सी प्रोग्रेशन ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्रमाद वीर्यम बलम वर्णो रुचि अग्निश्च गीयते, ऐसे देखा जाता है ये पेशेंट और इस तरह से इस पेशेंट में प्रॉब्लम आने लगते हैं। इट टेक्स 8 to 10 years ऑल्सो। पर क्या हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेन हेतु वर वेगावरोध, क्षय, साहस और विषमाचन। अगेन द थर्ड केस, male 21 years old, he was having HLA-B27 positive and these were the symptoms. What are these symptoms? मैं सिर्फ रेडनेस, स्वेलिंग, एनोरेक्सिया, फीवर इस भाषा में बोल रहा था। आप अभी देख सकते हो इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, संधि शैथिल्य, लॉस ऑफ फंक्शंस, खंजपांगुल्य, कॉन्ट्रैक्चर्स, अंगुली संकोच, एट्रोफी, मांसक्षय, टेंडरनेस, स्पर्शासहिष्णुता, स्वेलिंग, शोफ, राग, वृष उष्मता, स्तब्धता, ज्वर, अरुचि, क्लम, मंडल पीड़क। What is this? वातरक्त. So this was a case of वातरक्त. Every time it is not वातरक्त. In case of Vatarakta, if it is pain, it is Vat, tenderness, Pitta, stiffness, cough, and in case of Kapha Pitta, it is stiffness only. In case of Vat, it is contractures, Anguli Vakrata. In case of Pitta, it is edema. In case of cough, it is pain with edema with stiffness. In case of V, it is ankylosis. In case of P, it is mainly vasculitis. सीरा विशोष्य, that is known as सीरा विशोष्य। अगर आप आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी देखें तो ये देख सकते हो। In case of Vata, it is cold intolerance. Pitta, it is fever. In case of degenerative with deformities, अगर हो तो कफ पित्तज में ये देखा जाता है, mainly it is inflammatory. And in case of Pitta Vataj, that is second last stage, in which it is inflammatory with deformity.
सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस एंकिलोजिंग ही है, पर ट्रीटमेंट बदल जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. इफ इट इज वातज, जहां पर हमने देखा पेन वॉज सिवियर, इन दैट केस विदारियादि, द्राक्षादि और बृहत्यादि कषाय कैन बी यूज्ड. In case of Pittaj, Guduchadi, Kokilaksha and Balaguduchadi is used. In case of Kafaj, it is Rasna Saptak, Chitrakali, Gugul Diktak and Dhanvantaram. In case of oil, Kshirabala, Nara and Pindatel can be used in Vatarakta. In case of Pittaj, it is Kshirabala, and in case of Kafaj, Sahacharadi, Saindhavadi or Dhanvantaram tail is used. सो अवस्थानुरूप निदान क्या था इस सब में? अगर ये आमावस्था में पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत बार यू हैव टू ट्रीट इट एज से विषम ज्वर और ज्वर, वो आप इवेल्युएट करो. इफ इट इज पच्यमानावस्था, आप वातरक्त या आमवात ट्रीट करो. अगर इट इज पक्वावस्था, वातव्याधि या अस्थि मज्जागत वात करके ट्रीट करो. और पेशेंट कम्स टू यू विथ उपद्रव, देन ट्रीट इट एज क्षतक्षीण और राजयक्ष्मा. इस तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की अलग अलग छटाएं हमें पेशेंट में दिखती है. अलग अलग तरीके से हमें पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है, एंड देन ओनली वी गेट गुड रिजल्ट. अच्छा आयुर्वेद हमें समझना है, अच्छा मॉडर्न साइंस हमें समझना है, हमें पेशेंट समझना है. और आप बिल्कुल ये भ्रम में नहीं रहना कि सिर्फ आयुर्वेद समझ के ये प्रैक्टिस हो सकती है. द आंसर इज नो. क्यों? क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स में अगर आपको निदान समझता है वो तो पहले 10 सेंटेंस में ही समझता है. अगर वो नहीं समझता तो 2 घंटे भी आप हिस्ट्री लो तो बिल्कुल नहीं समझता. क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स ये एकदम पिन पॉइंट डायग्नोसिस की ही ब्रांच है, और इसमें आप एक 2 घंटे अगर सिर्फ हिस्ट्री लो या बहुत ही अलग तरीके से कुछ मेडिसिन यूज करने की कोशिश करो तो ऐसे कुछ नहीं होता. गुड़ चिकित्सा या मुझे लगता है इस तरह की चिकित्सा, इसमें करके कोई भी फायदा नहीं होता. केवल दोषज हो तो, केवल पित्तज हो तो तिक्तरस, गुड़ुच्चादी और अमृतोत्तर कषाय यूज होता है. कफा अनुबंधित पित्त हो तो कषाय रस, जिसमें आरक बदादी, पटोल कटुरोहिण्यादि, दशमूल कटुत्रयादि, दशमूल इस तरह के यूज होते हैं. और कषाय रस का यूज होता है इन आहार. कषाय जो औषधि है वो ये यूज होती है, जो कषाय होते हैं वो कषाय रस भी यूज होता है. बात अनुबंधित पित्त हो तो मधुर रस यूज करना चाहिए, जिसमें द्राक्षादी और षडंग पानीय इन दोनों का मेल होता है. If along with polyarticular arthritis, if your GI disturbance is there and it is kapha vataj, then go ahead with dashamula katutrayadi. इस तरह से सिर्फ शोध हो along with say pain, then go for dashamula, etc. etc. इस तरह के अलग अलग बस्तियों का प्रयोग भी, क्षीर बस्ती हो, अर्धमातृका बस्ती हो, मधुयष्टादि हो, बलागुच्चादि हो, दशमूलादि, मुस्तादियापन, इस तरह से अलग अलग बस्तियों का प्रयोग भी होता है. और एक बात मैं कहना चाहूंगा, a patient of say female 59 years old comes to me, HLA-B27 positive, X-ray showing bambooing of spine. So patient was having atimanda chesta, vachane kathorata, anga bhanga, कंप, कार्श and मेदक्षय. This was ankylosing spondylitis case? No. भेदो अस्ति पर्वणाम संधिशूलम मांसबलक्षयः. मज्जा अस्थिगत वायु में संधिशूल ये लक्षण है, और संधिगत व्याधि में अस्थिक्षय ये लक्षण देखा जाता है. रिमेंबर दिस थिंग. संधिशूल ये मज्जा अस्थि कुपितो अनिलहा में है, और अस्थिक्षय ये संधिगत वात में दिया हुआ लक्षण है. Many a times a patient of say janusandhishul will treat it as say osteoarthritis and it is majjasthi kupite anilaha. So Ayurvedic diagnosis is very important, but
Just a minute. Again, one question. For this, thank you very much for such a useful class, sir. For this, which book of Ayurveda should refer by you to read, like Sushruta Samhita or any other? सब पढ़ना पड़ेगा आपको. इसके लिए कौन सा बुक यूज करना चाहिए, ऐसे उन्होंने पूछा है. तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो इसके लिए. बहुत मतलब ये सब कुछ कंटिन्यूअस पढ़ने के बाद, उसको पेशेंस देखने के बाद फिर आप कोरिलेट कर सकते हो. और मैं वापस आप सभी को, आपको थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, पर आप सभी को वापस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मॉडर्न साइंस जरूर पढ़े, क्योंकि अगर आपको पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच आता है तो ही आपको फायदा है. अभी सिर्फ मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही दिखा रहा हूं, पर अलग अलग 4-5 केसेस मैंने बताए. सभी में मैंने डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस अलग अलग था और ट्रीटमेंट भी अलग अलग थी. सो ये इस सब में इंपॉर्टेंट था. सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब हम अवस्था का विचार करते हैं तो इट इज सामनिराम, आमाशय समुत्थ, पक्वाशय समुत्थ, अस्थायी वक्रता और स्थायी वक्रता के पेशेंट अलग अलग देखे जाते हैं. वेगावस्था, सब एक्यूट और अवेगावस्था ये अलग अलग देखा जाता है. सज्वरावस्था, सब एक्यूट सज्वरावस्था और निर्ज्वरावस्था इस तरह से भी देखा जाता है. मतलब सज्वरावस्था, सब एक्यूट मतलब आप पच्चमानावस्था जान ले. सज्वरावस्था, पच्चमानावस्था और निर्ज्वरावस्था इस तरह से भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हमने देखे हुए. तो एंकिलोजिंग सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव है, पर आयुर्वेद के हिसाब से हमें इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. और आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, और वो है अभी मन्या पृष्ठ कटी त्रिक ग्रह के पेशेंट हमें दिखाई देते हैं. अस्थायी वक्रता जो है उसमें टेंडन और लिगामेंट डिफॉर्मिटी होती है. इसमें सज्वरावस्था, निर्ज्वरावस्था दिखाई देती है. स्थायी वक्रता हो तो दैट इज बोनी डिफॉर्मिटी विच इज इरिवर्सिबल इन नेचर एज पर एज स्टिफनेस इज कंसर्न. तो उसमें भी सज्वरावस्था, निर्ज्वरावस्था दिखाई देती है. और एक अलग बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना पक्वाशय आता है ना आमाशय आता है, कोई भी सिम्टम नहीं दिखता, फिर भी ब्रीजिंग सिंडेस्मोफाइट की वजह से दिखाई देने लगते हैं. एंड दैट इज कशेरुका समुत्थ वातव्याधि. इसमें कुछ किसी भी अदर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई नहीं देती. ऐसी बहुत सारी केसेस देखने के बाद मैंने ये टर्मिनोलॉजी मेरे लिए डिफाइन की है. ये भले गलत हो या सही हो, that I don't care for. I am a clinician. I am not at all academician. Academics, सिर्फ academics से आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की केस बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते. आप उसे पेपर पर जरूर इवेल्युएट कर सकते हो, पर आप वो पेशेंट मेडिसिन देके चल नहीं सकता. मेडिसिन देके चलने के लिए उसके लिए अनुभव और शास्त्र दोनों हाथ में हाथ डाल के आने चाहिए. हमें कितना भी लगे कि इसमें भल्ला तक कफजो न सरोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्ला तकम अन्यत्, पर ऐसा नहीं है. ऐसा जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है. नहीं तो ऐसा हो सकता था ना कि आमवात गजेंद्रस्य शरीरवनचारिणः एकमेव निहंताय एरंड स्नेह केसरी. सिर्फ एक एरंड स्नेह है कि जो आमवात पे राज कर सकता है अलग अलग व्याधि अवस्थानुसार. ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता. आप पेन कम होने के लिए इस तरह से आप एक हाथ ट्रीटमेंट करने के लिए वो पेशेंट स्पॉइल हो जाता है, पर वो ट्रीट नहीं होता. तो हैंड इन हैंड आपको मतलब क्लिनिशियन को, एकेडमिशियन भी होना चाहिए पर मेनली क्लिनिशियन ही होना चाहिए. In case of Kasheruka Samutta, there are 3 basic points. साम, निराम एंड लीन दोष. लीन दोषों की चिकित्सा अलग होगी जिसमें स्वेदन आता है. आप एकदम इजीली पूछ रहे थे कोई कि स्नेहन स्वेदन कब करे, लीन दोष हो तब करे.
अभी लिंग दोष पढ़िए। सो ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो अध्ययन है हमारे 3-4 दिनों का रिलेटेड टू लंबार स्पाइन, it is not at all DC drug centric, it is not at all panchakarma centric, it is not at all required। आप डिराइव करो अलग ही मेडिसिन और आप वो कर सकते हो अगर आपको अच्छी तरह से ये कशेरु का समुत्थ लीन दोष हुआ व्याधि है ये समझ में आया तो। अगर लीन दोष समझ में नहीं आया, कशेरु का समुत्थ है ये नहीं समझ में आया, तो हम सिंहनाथ गुगुल दे या त्रयोदशांग गुगुल दे या रसराज दे, पेशेंट ट्रीट नहीं होता। सो हम कल इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अमित फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू श्रेयस ई लर्निंग। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. On behalf of delegates and all and Shreyas E-Learning Academy, we are really thankful to witness your this much experiences. I'm very much sure that we will all be benefited with these experiences in our clinical practice. Thank you, sir. Thank you for your valuable time. Thank you, sir. Thank you.